Let's start. ठीक है. What is question number 3? First and second question already we have discussed. Sorry. Question number 1 कौन था? Management and care of exceptional children. And question number 2, management and care of gifted children. Right. Question number 3, describe the physical developmental changes in the adolescent of both the genders. Okay, very simple question, normal question. So in general, what are the changes we observe? How to approach this question? केमते हमें करिबा? So physical development, हाँ. then all the more secondary sexual organ development, Yes. and internal organ development, motor development, height, weight, and all. Yes, that's what. ठीक अच्छे. तो that's the physical development. Okay, तो एटा को हमें approach केमती करिया question को? सर फास्ट होची एडोलेसेंस रो तीनटा पार्ट्स थिबो गोटे होची प्री एडोलेसेंस देन होची मिडिल एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस अपन तो डिवाइड करते हैं. हां देन मेल और फीमेल पई बोथ पई अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट हो कि अपन ऑर्गन स्ट्रक्चर हो कि अपन माने किछि डेवलप किछि डेवलपमेंट से मानकर डिफरेंट अछि और किछि कॉमन अछि, राइट? यस सर. ठीक अछि. ओके. एनीथिंग एल्स के ए विषय रे किछि ऐड करबो चाहछंती? सब फिजिकल सहित तांकर मेंटल डेवलपमेंट भी चेंजेस हाँ, स्विंग मेंटल मोड डेवलपमेंट तो देखो सेटा हुए किंतु एइटी हम कोन लिखछि फिजिकल डेवलपमेंट ऊपर डायरेक्टली माने आपण क्वेश्चन रे डायरेक्टली लिखा अछि. Describe the physical developmental changes. Okay. So whatever changes that is visible to the outside, we have to write on that, right? सर जेमति हम कंटेंट देखिबे ना, कंटेंट रे देखो स्क्रीन मस्ट बी विजिबल. तो कंटेंट रे कोन अछि हमको गोटे अछि फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, then development of the aspirational achievement, and finally there is a personality development, right? And family relationship. So physical and sexual development in the adolescent যদি আমি approach করিবা, then approaching by giving a definition of it adolescence প্রথমে. What in adolescence? Adolescence is a transitional stage of the physical and the physiological development that generally occurs during the period of the puberty. যেতବେଳେ puberty trigger করে জনে childhood ରୁ adulthood ভিতরে जो गोटे transition phase ଅଛି, this is the childhood and this is the adulthood, right? Give me one second. This is childhood, this is adulthood. तो ए भितर कोन puberty गोटे पॉइंट आसे जो पॉइंट रे childhood रो से adolescent भितर को एंटर कर जाय, right? So this is what. Then puberty is a unique and the distinctive period which characterized by certain developmental changes that leads to the sexual maturity. So sexual maturity is the outcome, but developmental changes are the processes, and the triggering point of the process is puberty. Which question समझते? तो माने ए जो adolescent रो जो characteristics से देखिए, why it is so unique and why it is so different from other stages. आउ काहे की बहुत important मध्य, because first thing, it is an important period for the physical, biological and physiological development. तो आमे समझते निज भितर सेटा ऑब्जर्व करिजे, because we all have gone through that phases. जो particular point रे, see there are two phases of you can say rapid growth in a human body. गोटे एक तो जन्म हवा छुआ बहुत शीघ्र बढ़े. द्वितीय कथा होची गोटे चाइल्ड जेतोल एडोलसेंट को एंटर करे सेतोल से बहुत शीघ्र बढ़े. तो दैट्स व्हाई द रैपिड ग्रोथ रो दीटा फेज अछि, दीटा को इक्वली इंपोर्टेंट. से गवर्नमेंट जो भी न्यूट्रिशनल फीडिंग एंड ऑल दोस प्रोग्राम्स करूछथि, तो दीटा को टारगेट रे रखिता होछन गोटे चाइल्ड पे आ गोटे एडोलसेंट पे, राइट? नेक्स्ट, इट इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड. एडल्टहुड रे तो हमें जीवन रो मैक्सिमम टाइम को स्पेंड करिबा, बट द प्रिपरेटरी फेज
preparatory phase to enter into the adulthood is the adolescent. If there is a very peaceful transition from childhood to the adulthood, then the next phase of the longer phase of our life is quite settled, right? Next, it is also age of problem, हमको problematic age कहूँ. Why it is so? Because बहुत tensions था, varies ऐसे you माने anxieties, emotional changes, hormonal problems. तो ये सब गुड़ा बहुत normal. Okay, especially because reasons are there. Okay. Next, identifications formations এই জায়গায় হবা start हुए. आप पूर्वरु कौन parent करो identity was sufficient for the child, right? Or whatever মানে ତାଙ୍କ guardians करो identity that was sufficient. But this was the initial point where the child or the adult or the pre-adult will search for their own identity. Here onwards, they don't want to live under that shadow of their elder identity, right? Next ase kona unrealistic aspirations ase, because even they don't know মানে ସେ କଣ expect କରନ୍ତି family to. As I told you कि ଗୋଟେ point ରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ adult ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ point ରେ ନିଜକୁ child ବି ଭାବନ୍ତି. Okay, not only for themselves but also for their families and friends, the expectations were quite different, right? और finally ଆମେ ଆକୁ threshold ମାନେ of adulthood ବି କହୁ. Why it is so? Because ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଛୁଆ ଏମିତି ଜିନିଷ ବିହେଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି adult ରେ କରିବା permissible. ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ହସେ, ଓକେ, ଅଦରୱାଇଜ କି ସ୍ମୋକ କରୁଛି, ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି, ଯୋଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାନେ ଇଟ୍ସ ମାନେ legally it is not permissible at that particular age also. Okay, so it is a period in which adolescents try out certain social unacceptable adult behavior like smoking, drinking, etc. to create an impression they are like the adults, right? मोटा केवल एमती डिस्कस करछि. This is not at all that important to write in this particular type of questions. Maybe some other questions you can incorporate, right? Coming to the physical development and the sexual development that is asked in our question. So physical development trigger केमती होउछि जेतोळे hypothalamus in our brain stimulates the pituitary glands to send extra growth hormone, okay, through the body, resulting into a sudden change. जो जिनसे मैं आपन को होतली, the pituitary gland से कौन करे through the hormone से जेतोळे stress release, sorry, pituitary hormone जेतोळे release हुए, ये adrenal gland और testis gland in like in boys and in ovary gland in the girls. So that's going to secrete और जोटा कि हमारा different type of जो माने developmental activities अच्छी जो sudden developmental spur जो देखो जो that will take place. Okay, what are the physical development in general? What we see, if you're going to give a broad picture, it is like a see, deepening of the voice, and this is very much evident in male. Okay, next, facial hair. This is also male, like pubic hair and all. Next, that is common in both male and female. Then changes in the height and weight, broad shoulder. This is this is for the boys, and then there is broad hips generally for the girls. Okay, muscular development, higher muscular development in case of boys, and higher fat. What a particular point of fat deposition hava start with, that is for the girls. Okay, so the hallmark of the adolescent is the cluster of key changes. What are the different a lot of changes will come into the picture in a very small and brief period of time. So that is the adolescent ro jo ame key points ame kochu, key observations, hallmarks kochu. Okay, so the cluster of changes includes primary and secondary sexual characteristics. See, primary sexual changes are very much like it's माने evidental जिनसो गुड़ाको जोटा कि जने that is it's a physical part of change. Okay, secondary sexual developments are quite perceptional. Okay, it's not that physical one. Let us see. So main changes that takes place जदि हमें देखिवा adolescent समय रे जो main changes होउची ताको हमें divide केमती करूछु, we call it as the growth spurt. So what is growth spurt? जो हम कहली significant sudden change, बहुत शीघ्र change हबो और बहुत गुड़ाए change आसीबो. Okay, and the change is in the height and the weight. If you see जो गोटे adolescent रो enter करू गोटे particular point आसे जोड़ा में high school वगैरह रे थाउ तो हट्टा दवा height और weight बढ़िया start हुए. Okay, compared to our earlier state ताको हमें growth spurt को.
okay, of an individual that turns them into the adolescents, right? ताको growth spot भितर दीटा जिनस आसे गोटे होची height और गोटे होची weight. This is the height. During this period height increases nearly double the rate in the childhood. The child जो trait हमें पढ़ू ताकू double rate बढ़िया start हुए. Increase in the weight. So adolescent experience a significant increase in the weight. The weight gain during the adolescent, it constitute during nearly half of the body weight. माने हम जीवन रो suppose now your weight is around 70 kg or 80 kg, so almost half of your now weight you almost like gained during the adolescent period, right? Then third second first growth spurt gala तापरे होची body रो proportion change हुए जेमते मैं कहूँ कि bone रो development, bone mass जो. Next is muscular development. Okay, so this why these changes takes place bone or muscle ro, because that enables a person makes the person capable of doing greater physical work. Okay, so before that जो छुआटा से करी परिवनी just because they don't have the bone and the muscle mass. Okay, so they lack the ability itself. Okay, so this is also important. जेमते मैं कहूँ broad shoulder and increase in the in case of the boys and broad hips in case of the girl. The trunk and the limbs also grow much faster than the other part of माने आम बॉडी रो लिम्स गुडा को हमें देखिया कंपैरेटिवली बॉडी रो अन्य पार्ट कंपैरिजन रे बहुत शीघ्र बढ़े. ओके, so that is also quite visible during this period. Next, third important thing or change that we observe is the primary sexual organ change. It's very normal and very easy, like it's very physical in part. Okay, this this means the like maturation of the sex organ, change in the change in case of the boys इधर में देखिबा testes, scrotum sac, ऐसे गुड़ा का जिनसे बोला different type of जो changes that make one person the nocturnal emission that makes one boy conscious that some sexual changes is happening inside him, right? In case of the girls, the same uterus, fallopians, so like that. And the onset of menstruation, that also make a girl like conscious so that some sexual changes is happening. Now, age of sexual changes जो realization आसे, that creates a mood swing or that creates जो को ना देखिए instability, whether they are adult, whether they are child. So that the transition phase they observe inside themselves, right? So third one, sorry, fourth one is the secondary sexual characteristic changes. जो जिनसे देखो secondary sexual characters are external changes. Okay, external changes that makes them attractive to the opposite sex member. Generally, in case of the boys, what we see, pubic region hair growth, underarm hair, facial hair, change in the deepening of the voice. Okay, जो larynx हमें कहो माने Adam's apple जो घंटी का पाखरे गोटे protrude portion हमें देखो, that is called that is responsible for your deep voice. Then increased muscular development. This is common in case of the boy. In case of the girls, there is development of the breast, then fat deposition in the hip, growth in the. This is common. Then underarm hair. This is common in both boy and girl, right? So if you see the development, this is primary sexual development, then secondary sexual development. So primary sexual development is the increase in the size and the ability of the reproductive organ, right? And this is also तो एटा होची आमे प्रथम साइज अनुसार कहले आ गोटे एटी फंक्शनलिटी कथा कहले. So these are the two part. So the functionality development of the reproductive organ, so that takes place in terms of your primary sexual changes. Coming to the secondary sexual changes, so this is very common. जेमति मु कहली body रो perception change होची, hair रो quantity change होची, then voice रो depth change होची, muscular development change होची, that is happening as a secondary changes. Okay, so onset हमें girls और boys दिजे हुए और puberty रो माने sign अनुसार कौन आसे menstrual cycle और nocturnal emission. This is the sign of this puberty. Okay, so physical changes जेमति हमें कहले, if required you can segregate as a common to boys and girls, specific to boy and specific to girls, both the gender as it is stated by in our question and is desired by in our question. Okay, so जो common changes हुए, this is for the pituitary gland is responsible for this, and for the specific changes in case of the boy it is the adrenogen and testosterone.
hormone, and FSH and LH, these hormones are responsible for the changes in case of the girl specific, right? हाँ, गोटे जिनस कौन अर्ली मैच्योरेशन और लेट मैच्योरेशन, यू मस्ट हैव सीन आपण आमे भी देखिथि हम एडल्ट एडोलसेंट टाइम रे कि किछि छुआ आम सहित पाठ पढुथि से माने बहुत बड़ होई जाथि, माने हाइट रे ग्रोथ रे दे सीम्स लाइक क्वाइट एडल्ट बट स्टिल दे आर विथ अस, दैट इज द अर्ली मैच्योरेशन. एंड इवन वी हैव सीन सम ऑफ आवर फ्रेंड्स ड्यूरिंग आवर एडोलसेंट कि से माने आमठु छोट देखा जानथि, ओके हाइट से माने केते बॉडी न थाए, तंको आबे डिफरेंट डिफरेंट नारे डाकू ये जहां भी हो, दिस इज वेरी कॉमन. सो बोथ आर नॉट द नॉर्मल साइन ऑफ योर एडोलसेंट, इट इज कॉल्ड आइदर अर्ली और लेट मैच्योरेशन. जदि अर्ली मैच्योरेशन और लेट मैच्योरेशन होउची तो कोन माने को कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाय से माने भितरे, तो कोन एटा भलो ना खराब, लेट अस सी दैट the girls attain their adult height and weight about 2 years earlier than boys. So girls used to mature earlier than the boys, right? Good a second. Okay. Next, girls became sexually mature before the boys because जेमती से माने physically mature होती, सेमती sexually mature ही जानती जल्दी compared to जदि गोटे माने एडोलसेंट टाइम रे जदि देखिबे, दिस इज क्वाइट नेचुरल. झियो माने जल्दी माने से माने तांको पाखरे पेशेंस टिके अधिक आस जाई थाए माने कंपेयर टू द बॉयज. व्हाई? बिकॉज़ दे अटेन द मैच्योरिटी क्वाइट अर्ली, राइट? तो आमे जदि देखिया बॉयज माने पाखरे जे अर्ली मैच्योरिंग बॉयज जे जल्दी मैच्योर हो जाती, तो से माने टॉल स्ट्रॉन्गर देखिए माने बड़ा लोकों भलिया देखा जाती. आम सहित पाठ पढ़ुतांती सेही 7th 8th 9th स्टैंडर्ड रे, बट स्टिल वी परसीव देम फिजिकली टू बी क्वाइट एडल्ट, राइट? तो मोर से माने कोन होंती जेंतु से माने गोटे बहुत बढ़िया बिल्ड थाए, तो से माने को पॉपुलैरिटी बहुत बढ़िया थाए, तो दे आर यूज्ड टू बी क्वाइट मोर पॉपुलर. गुड बॉडी इमेज से माने को थाए, दे यूज्ड टू टेक पार्ट इन जो स्पोर्ट्स इवेंट, जो फिजिकल एक्टिविटी इवेंट से बहुत बढ़िया माने से माने पार्ट नियंती. एंड इवन दे हैड सर्टेन प्रेशर आल्सो, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रेशर. पाई जो सोसाइटी रहिला बा सोसाइटी इन द सेंस, सपोज तांका पीयर कथा देखंतु, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. राइट? तो फेस से माने किछि सोशल प्रॉब्लम फर्स्ट से माने पीयर ग्रुप रे देखंतु, तांको संग साथी माने आम निजे संग साथी आमे जतल देखुतलु गोटे बड़ छुआडी अछि देखा जाय बड़, से तळे सब जिंस रे एक्टिव पार्टिसिपेट करछु, आमे ताकू ना आम सहित एक्जेक्टली कंसीडर करनु. सपोज रे भाबो अंतु कि आपन को बर्थडे अछि, आपन 10टा चॉकलेट नेकी जाइछंती, आपन देखिले से छुआ को मिसी के 11टा होछ, आपन कहबे 10टा निज निज भितरे बाड देले, भाबे हां ठीक अछि बड़ छुआटा तो बुझी जीवो कथा. So I'm just giving a very silly example. This type of things happens. Even society जो रहिला, teachers माने रहिले बा parents रहिले, but whatever society they are living, सेमाने expect करंती those child to be quite mature, but सेमानक केवल physical growth ही थे, mental growth ही न था, right? So these type of things also happens. To face increase the social pressure as the society view them as emotionally advanced, but their cognitive and the social development lag behind their physical development. Okay. They had only the physical development, but the cognitive development and social development he has not yet achieved. Late maturing boys they कौन हुए generally से मानो लो confident थांती, because छोटो छोटो गुड़ा को थांती ना आम मैंने आमे देखी थी वैसे टिके काहा को नारे लोग को सब डाकंती, so they generally don't take part actively in the peer groups, in the sports activity, in other physical activity, तो साई out ही की रुहंती से मैंने सब बोले. So this is in case of the boy. In case of the girls, the early maturing girls को पाखरे कौन था, प्रथम कथा होची जेहेतु से जल्दी मैच्योर कर जाते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थांती से माने. So you find among your peer groups during your adolescent, you will find this thing, so problem solving thanti and become more insecure, like since their body like body jaldi develop kare se mane tanko sango sathi jodi alga habya start karan, that is one thing. Can also develop jehetu se mane a because of this particular point, sometimes they develop eating disorder. Okay, अब eating disorder जो वो obesity जो गोटे particular point रे जल्दी से माने attain कर जाते हैं, even that last the entire life sometimes. Okay, late maturing girls को पाखरे कौन थे, then obviously for their appearance still they are quite worried
बट से माने कॉन्फिडेंट थांदी सोशल इंटरेक्शन पाई this you sometimes you sit down and try to assimilate with your past experiences. Obviously you will find these are very correct and true in nature, right? So this is all about the physical and sexual development. Physical development pacharji, if at all it is being asked in the line of your sexual development, you have quite a few pointers to write on that. Kichi doubt achi? You want to add something, you tell me. सर ये जो पॉइंट अर्ली मैच्योर एंड लेट मैच्योर से गुडा को फिजिकल डेवलपमेंट ऐड करियो if it is required mu dekhantu ei guda ko na mu jetebale पढुथली सेतेबेले whatever the points it is possible sei माने लाइन रे मु डिस्कस करे दिछि आपन को बुझी पछंती ए क्वेश्चन रे जिंस दरकार नाही जदी एडा 10 मार्कर रे आसे बा 15 मार्कर रे आसे द पॉइंट इज दैट आपन को क्वेश्चन रे 15 मार्कर या 10 मार्कर केवल ए जिंस केवल ए पॉइंट आसी पारे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट तो नॉर्मल अपन एडोलसेंट विषय लिखिबे फिजिकल डेवलपमेंट विषय लिखिबे किछि जेहेतु टाइम नै अपन पाखे लिखिया पे नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट तो लिखिबे ना कि माने केमते हमर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड से माने हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो नॉर्मल वाला स्टोरी एटलीस्ट ए जो मु गोटे टेबल आपन को देखैथिली जो टेबल रे हमें सेग्रीगेट करथिले लाइक दिस एटलीस्ट ए टेबल तो अपन ड्रा करिए फटाफट देन यू गो टू द प्रॉब्लम्स लाइक दिस कि अर्ली मैच्योरिंग कोन हबो लेट मैच्योरिंग कोन हबो बॉय केस रे से जिनसटा कोन गर्ल्स बनो केस रे सेडा कोन राइट यस सर आउ के किछि ऐड करिवे लेट मी नो सर एक्ने हुए हां 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 से गुडा को मु लिखि देबे ठीक अछि सेटा भी फिजिकल अपीयरेंसेस रो बा सेटा भी गोटे टाइप रो साइन आपन कहिबे ठीक अछि ना लिखा है सर मु लिखि छि कि कॉमन हां पिंपल्स एंड एक्ने ओके सॉरी मैं एटा पढी नहीं तो पिंपल्स एंड एक्ने ओके थैंक यू मु बहुत दिन पर पढु छि तो right so shall we add something to this or we'll move to the next question जदि कहीं किछि अलगा वे रे लेक्चर में किछि एक्स्ट्रा पॉइंटर्स दै छथि लेट अस नो नो shall we move okay ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला give a detailed picture of social and emotional changes in adolescent okay tell me what do you understand by social and what do you understand by emotional development or the changes in adolescent कौन social changes आसे सर फ्रेंडशिप डेवलपमेंट ग्रुप फॉर्मेशन Okay, इंटरेस्ट one by इन one, अपोजिट जेतବେଳେ फोन दे मोर गोटे सांग कथा मन पड़े तो बैचमेट जणे अछि तो सिविल माने अपन वॉइस भी ता बढिया मते लागे माने ताको तो यूपीएससी से दिथरो इंटरव्यू दिथले तो ताको एक्सटेंडेड लिस्ट भी ना अछि शाश्वती सदवाल कहि तो एग्जैक्टली द सेम पीच she will not stop she will say like this रुक जा okay sorry हाँ कौन दे नो सर no on a very positive note I had told you it's not a negative one don't take me otherwise नो सर okay हाँ कहंतु सोशल चेंजेस रे कोन जनरली हमें पीयर फॉर्मेशन करंती पीयर ग्रुप्स कोटे बढ़िया बना हुए ठीक अछि पीयर ग्रुप माने बुझी परछन ना समझते हमें जो गैंग माने से जो एडल्ट वाला गोटे गैंग थे एटा हमो गैंग सेटा तांको गैंग राइट स्ट्रांग बॉन्ड थाई गोटे सर स्ट्रांग फ्रेंडशिप क्रिएट हुए स्ट्रांग फ्रेंडशिप ओके एटा में ना जनरल कैरेक्टर्स लिखछे नॉट चैलेंजेस लिखछे चैलेंजेस पर देखियो इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स हाँ सेटा भी होबो माने अट्रैक्टेड बाय टू अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स से बहुत झियों को केस एमती था जे तांकर बॉडी ग्रोथ ए सब थाए तो से माने टिके सोसाइटी रू भी बेले बेले बैक करके माने से जिंस मु आपन को भी फिजिकल रो प्रॉब्लम रे कहउतिली ना आपन को जो माने Sir. जल्दी मैच्योर को जंती तो ऑब्वियसली से कोन करंती ना माने तांको Mass के सोसाइटी जरिए- जो कंपेयर करंती हां
माने से मास निजको गैदरिंग को जानतीनी हाँ बहुत जिनस इवन ताको निज देखो आपण जदि मु कहली ना जेटल डिफरेंसेस मु कहूतली अर्ली मैच्योर और लेट मैच्योर भितरे तो अर्ली मैच्योर जो माने कॉग्निटिव वाइज ना से माने टिके जल्दी मैच्योर ही जाते दैट इज राइट ओके पार्टी अल्कोहल डिस्ट्रैक्शंस यस ए सब जिंस मध्ये एडोलसेंट रो प्रॉब्लम अछि जेमति पीयर ग्रुप रो से गुडा को नेगेटिव इंपैक्ट कहि परिबे जेमति बेले बेले से माने जो एडोलसेंट हमें कहूछु माने से जो हम डिस्कस करथले जो ड्रग एडिक्शंस होची ठीक अछि बेले बेले से गुडा प्रॉब्लम्स अछि दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेले बेले गैंग वॉर वगैरह रे भी इन्वॉल्व हो जानती किछि कन्फ्रंट कर जानती से माने माने एक्जिस्टिंग लॉज सहित ओके डेलिंक्वेंसी कथा हम डिस्कस करथिले ऑलरेडी तो ये सब प्रॉब्लम्स आसे ए एडोलसेंट समय रे बट लेट अस वी आर नाउ फोकसिंग ऑन स्पेसिफिकली द सोशल प्रॉब्लम सोशलाइजेशन हबारे ताको प्रॉब्लम कोन भी जदि साधारण भाषा रे हम बुझिबा जेमति आपण कहले दिस आल्सो यू कैन ऐड कि जदि गोटे पुओ बा झियो जल्दी से मैच्योर फील कर जाउची देन स्पेशली गर्ल्स मानन केस रे टिके अधिक हुए तो से माने टिके साइ आउट करंती इंटरमिंगल होआ पे दैट मच मिंगल करिया पई तांको पीयर ग्रुप सहित बट से माने निजको टिके अलगा स्टैंड आउट भाबिया स्टार्ट करंती बिकॉज़ ऑब्वियसली cognitive development एते अधिक अचीव ही परनी जे they can understand and perceive what is happening because it's very difficult obviously आमर एजुकेशनल सिस्टम भी एमती हेनी जे ए सब जिंस गुडा को हम अर्ली जणो को सेंसिटाइज करछु इट कम्स इनटू पिक्चर वेरी लेट इन आवर एजुकेशन सिस्टम राइट तो these are also some of the problems तो सोशलाइजेशन प्रॉब्लम रे कोन हुए कि एक्चुअली कोन हुए ना कि छोटो छुआ आगरु थिले तो सेते बेले ताको पेरेंट्स करो गोटे सब बेले ताको गोटे यू कैन से प्रोटेक्शन लेयर सब बेले दरकार होतला दे वर क्वाइट हैप्पी विद द नेम्स एंड द protection of their like family but all of a sudden after entering into the adulthood or adolescent they feel themselves to be quite independent yes so they want to be independent right very good तो सब इंडिपेंडेंस रे गोटे सेवन पाखरे गोटे अर्ज रहिबो जते बेले सपोज पेरेंट आगरु तांको छाडिया जातले स्कूल केबे एबे जी तांको पेरेंट्स केबे नै मु स्कूल रे छाड देबी नो दे डोंट वांट दे विल गो बाय द इंडिपेंडेंटली ओके आगरु को हुतला छोटो मोटो किछि प्रॉब्लम हुतला आसे कि घरे डिस्कस करथले बा बापा मां को पचरुथले सेमानक सजेशन नउथले बट नाउ दे डोंट वांट टू डू दैट तो आप हटे कोन हो गोटे 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 फ्रंटियर क्रिएट हुए वर्चुअल फ्रंटियर यू मे से बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड because these type of adult type behavior in their child what the parent have not observed in the past obviously it's not very easy for the parents to understand also बुझी परछंती एबे गोटे छुआ थिला बहुत भलो मानकर गोटे माने गोटे पुओ थिला मां को सब जिंस शेयर करथला a point will come he will or she will not share everything to his or her mother okay he will start keeping secrets within him and all if any problem is also he or she is going through he is not expressing the same mu he or she barambar koni one gender I am telling aru jodi apono government book re likhe lekhai chi he includes she the same is for me right now okay don't say I am violating SDG 5 I am in support with the SDG 5 right so हाँ तो पीयर ग्रुप्स को ही से माने निजरो माने सब माने मेन जो कोन हंदी कि तांकर सोशलाइजिंग एजेंट भाबंती सोसाइटी को मध्ये से माने टिके अलगा नजर रे देखंती बिकॉज़ सोसाइटी जते बेले तांको गोटे छुआ हिसाब रे देखे तांको सेटा पसंद नाही से माने चाहंती सोसाइटी को गोटे माने तांको गोटे बेटर माने नजरिया रे देखु तांको गोटे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर देखु तांको निजरो आइडेंटिटी को से रिकॉग्नाइज करू सो there are lot of expectations so these expectations and reality ए भितरे जो गोटे गैप आसे that creates the socialization problem right बुझी परले सो बेले बेले भी माने पेरेंट्स को राइवल वाली माने फील yes करन yes पेरेंट्स को जो बहुत टाइम से मानको कॉन्फ्लिक्शन हुए आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट करे से मानको बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्शंस हुए आउ हां ग्रेटर सोशल स्किल बुझी परलेनी माने ସେମାନେ सोशल रे बेटर ସେମାନେ ମାନେ ଅଧିକା ଭଲ ସେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଟୁ ଅଧିକା हाँ करि पारंती नो डाउट बट सोशलाइजेशन से मानक द्वारा ही पारेनी बिकॉज़ बुझी परछंती द रियलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस भीतर बहुत देखो सोशलाइजेशन केवल तांकर बेटर ही परिबो ड्यूरिंग एडोलसेंट केवल तांको पीयर ग्रुप सहित काहे की हुए नॉट बिकॉज़ ऑफ द स्किल्स बिकॉज़ ऑफ ओनली वन थिंग
कि सेही समय रे ना से पर्टिकुलर फेज देके जो हमें देखिले जो फिजिकल चेंजेस सेक्सुअल चेंजेस से जो इमोशनल चेंजेस ए सब चेंजेस देखि सी भी जाउची और तार सांग भी गोटे जाउची तो दे Matching सी mentality ସେଇଟା हां मैचिंग मेंटालिटी मिरर इमेज हिसाब जने आ जन को देखंती so that is the only thing that binds them other than that socialization skills थाए but problem कौन हुए ना कि से जो expectations और reality भितर गोटे गैप क्रिएट ही जाए जेमति कहली ना कि छुआ निश्चय भाबरे छुआ समय रे जेतोले माने चाइल्डहुड रे थांती से माने पेरेंट्स सहित बहुत ही लेमन टाइप रो माने बहुत ही माने इमेच्योर टाइप रो से माने कम्युनिकेट करती कंपैरेटिवली एडल्ट रे बेटर कम्युनिकेट करती बट द कम्युनिकेशंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ राइवल वे yes clashing values and the with the adults and all तो से जो कहली values एबे बटम जेमति कहली कि एबे मां अछि मां को एई जिंस जणा कि तांको पुओ अछि चाहा भी छोटो मोटो भलो मंद हला छोटो बेलो तांको आगे सब जिंस कहि आछी गोटे समय आसला छुओ पुओ आ किछि माने एक्सप्रेस करनी मां को और मां काली जानले जे नाही एई जिंस किछि गोटे घटिछि छुआ सहित तो सी तांकोठू किछि जिंस एक्सपेक्ट करिवे के रे ए मो छुआ तो आज पर्यंत सब जिंस मते कहउतला काहे केबे कहूनी तो से अभिमान करिया स्टार्ट करिए बाय XYZ प्रॉब्लम्स so there are certain expectations that we see during the adolescent if we want adolescent to be very peaceful and it should be very good in transition and the development should be achieved in a proper way then there are certain expectations from the society from the teachers from the friends from the peers from your adults and finally the major role to be played by the parents also parents needs to be quite supportive so I mean different parenting skills I mean independent on choosing their outfits food and everything yes so आमे मोर और लेस जानले जे सोशलाइजेशन रे प्रॉब्लम कोन हुए कहि कि राइट मैं साधारण भाषा रे कहया को कहले सोशलाइजेशन रे सी आमे बहुत डे पॉइंट जानचो पॉइंटर्स जानचो लिखि परिया बेले बेले हम कंफ्यूज हो जे एग्जाम रे बसे कि सोशलाइजेशन को इमोशनल सहित मिसेला स्टार्ट करिया एडोलसेंट और सोशलाइजेशन प्रॉब्लम्स को सोशल डेवलपमेंट को आमे चाइल्डहुड रो सोशल डेवलपमेंट बिकॉज़ सब जिंस हम एग्जाम माने सिलेबस रे देछि तो बी कॉन्फिडेंट कि को ऊपर हमको लिखिया को पड़ियो जेतोले एडल्ट रो सोशलाइजेशन आसीयो तो दिस इज द थिंग माने रियलिटी आउ एक्सपेक्टेशंस भितर गोटे गैप क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ द एडल्टहुड चेंजेस राइट तो कमिंग टू इमोशनल चेंजेस कौन और काहे की हुई due to hormonal changes yes तो मेन जिंस होची जो सडन डेवलपमेंट हुए तांको भितर गोटे सडन सर्ज ऑफ हार्मोन्स चलची जेंते आपण जने आपण कहूतिले कि जो अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स हते से माने टिके निजु को साई आउट करंती सोशल गैदरिंग को ओके तो काहे के जिंस हुए जस्ट बिकॉज़ दे ऑब्जर्व सर्टेन पर्सन जो कि जो हार्मोनल चेंजेस होची कंटीन्यूअसली तांको भितरे सो दैट हार्मोनल चेंजेस मूड स्विंग क्रिएट करे ओके तो सीस जो इमोशनल सीसो आमे कहूछु गोटे पॉइंट निजु को एडल्ट भावंती गोटे पॉइंट निजु को चाइल्ड भावंती तो सामना वाला भी जो अछि सी as per their mood swing they expect the counterpart to treat them in such manner but how the counterpart will know what type of mood you are going through right now suppose for example you have a very supportive very good parent okay suppose ratire you behave like a child okay they have pampered you pat you and everything so they have treated you like a child morning you have a mood swing now you are expecting certain adult type of behavior from your parent तो सकाळ उठी कि जेतेबेले बापा रो धनरो जदी सपोज किछि बापा मा कहि देले आमे कोन माने तांको पे चिड़ी जिवा नॉट आमे लाइक द एडल्ट दिस इज एक्चुअली रियल प्रॉब्लम तो now this is happening just because of the hormonal changes and certain developmental thing that they don't expect to happen in such a rapid pace okay तो एई जिंसो को नेकी जो प्रॉब्लम सब हुए that is the emotional changes or emotional struggle during the adolescent right let us discuss in that sense now कि किछि ऐड करिवे सल्वी से ସେଇଥିରେ ଆମେ एग्जांपल देखि लिखि परिबा माने जो क्राइंग छोट छोट कथारे कांदिबा बा एसबु लिखि परिबा ना yes लिखिबा as per our requirement we will write see jente a question ta jodi 15 marker achi how you are supposed to divide you have to divide it in a 7.5 manner right there kahi ki social changes ko ame 7.5 what is social changes why it is happening what are the social changes as you said like okay these are the 1 2 3 4 type of with citing 2 or 3 examples right तो आपन को सेटा को 1.5 pages रे निपटिवार अछि then you can jump into the emotional problems in the adolescent right that also you have to wind up in 1 or 1.5 days so by adhering to the time and
like जो भी आपनकर space और time रो constraint अछि, then you have to approach to the questions. तो as per the required जदि ए जिनसटा आपनकर इमोशनल चेंजेस केवल गोटे क्वेश्चन से आपन 10 मार्क पर पचाछि और से 15 मार्क पर पचाछि, then you can elaborate in very in depth, in detail, by taking something from your sexual or physical development, by taking something from the aspirationals and identity achievement जो भी रहिला. तो because see all the topics are not in isolation, so all the topics are in dependence with each other. जदि आपण देखिबे माने से इमोशनल सेक्सुअल चेंजेस हो, इमोशनल और सोशल चेंजेस हो, से डिपेंड करछ आपण फिजिकल चेंजेस ऊपर, आइडेंटिटी एस्पिरेशंस आल्सो डिपेंड करछ अदर जिंस ऊपर. तो there are a lot of interdependency. You can take out pointers from each other depending upon the marker it is asked for, right? Discuss kariye. Yes, sir. Okay. See, this is social and emotional changes. So adolescent can easily influenced by the people with whom they develop a close relationship, and in general they develop a close relationship only with their peers, right? तो जो मानक सहित से माने क्लोज रिलेशंस डेवलप करती से मानक सहित से माने से मानक कथारे से माने बहुत शीघ्र इन्फ्लुएंस हो जाती, and relationship has the largest effect on the social development during the adolescent phase. Okay, ता अर्थ से peer grouping रो impact हमें को प्रकार रिलेशनशिप था जनरली विद द पेरेंट्स, विद द peers and with the teachers. जदि माने चाइल्डहुड रे देखिबे तो स्ट्रांग रिलेशंस पेरेंट्स के सहित थाए, टीचर्स को सहित ओके रिलेशन थाए, प्रॉब्लम न थाए, से माने टीचर्स को सहित बहुत माने हेड ऑन हुंतिनी, से माने को चैलेंज करंतिनी, दे टेक देम एज देयर गाइड, दैट्स ऑल. ओके, दे डोंट हैव एनी नेगेटिव सेट फॉर द टीचर्स. बट ड्यूरिंग एडोलसेंट से माने रिविलियस हुंती, पेरेंट्स को सहित भी कॉन्फ्लिक्ट होवा स्टार्ट हुए, टीचर्स को सहित भी कॉन्फ्लिक्ट होवा स्टार्ट हुए. लेट अस स्टार्ट डिस्कस विथ ईच एंड एवरीवन, माने एवरी पॉइंट. पेरेंट्स को सहित रिलेशन जे देखिबे इन एडोलसेंट, there is often a significant conflict with the parents. Okay, generally arguments often occur due to माने छोटो छोटो जिंस को नेकी, जिन आपण कहउतले से मानको प्राइवेसी को नेकी, क्लोथिंग को नेकी, कोन खाइबे ताकू नेकी. So these are very silly things, but still it matters a lot to the adolescent. Disagreement with parents increases with the influence of the friends, especially with the peers. जेतोळे से बाहर को जिवे डिस्कस करिवे, मु आज खाया पई ए जिंस कहली, मा मते एमती कहले, तो सामना वाला जदी गोटे जिंस कहि देला, मु तो मागिली, मो मा तो दे देले, then again on that influence will be aggravated next day if similar thing will happen. कि तांको घरे तो अलाउ करछनी, मते केन करनांते. Quite relatable things even we have done sometimes during our adolescent, right? The adolescent do not like the parent control, so that creates a conflict between a parent and the child. तो इंडियन पेरेंट्स को पाखे प्रॉब्लम कौन था? इंडियन पेरेंट्स डू नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द ग्रोइंग एडोलसेंट, एंड दिस लीड्स टू ए फ्रिक्शन इन द रिलेशनशिप, राइट? तो सोशल मीडिया इज आल्सो प्लेड, माने आज डेट में देखिया तार रोल और अधिक रहिला. ओके, बिकॉज ऑफ अदर इन्फ्लुएंसर्स एंड डिफरेंट वीडियोस वी आर सीइंग. एडोलसेंट हु हैव, जो भी एडोलसेंट करो गोटे गुड रिलेशन, हां कंपैरिजन माइंडसेट आसी जाए, सेटा आई मीन ऊपर भी डिस्कस करथिले. तो एडोलसेंट हु हैव ए गुड रिलेशन विथ देयर पेरेंट्स, they have less likely to engage in different risk behavior like smoking, drinking, fighting, gang war and all those things. जदि भलो relations parents को सहित develop करि पारिले. Okay, so parents should not remove all the restrictions or should not be very restrictive towards their children, and they should reason out and give the adolescent the chance to express their opinion, right? This is a very good parenting skill. You should not remove all your restrictions. There should be some checks and balances, but the checks and balances should not be that great in nature so that they will feel like they are living in a prison. And so what बड़ जिनस कौन थाए जो कहना कि patient hearing, and this is quite acceptable in all phases of your life. काली अपन जदि गोटे ऑफिसर ही जिवे, the first and foremost thing that will be taught to you, you should be an officer to have a patient hearing, because in 50-60% of case there is nothing you can't do because your hands are tied by the law. But still, one people will come, some rural downtrodden deprived person, they have traveled for
around 50-60 kilometers just to meet you in a hope that on your first meet you will solve every problem in their life. This happens. You'll be sitting in a chair, they will come, and actually you can't do anything. That's the reality. जो Instagram reel of power of so and so, nothing. You are just a creature of statute. Okay, so what you can do, you can give them a chair to sit, ask them to have some water, and give them a 5-10 minutes of complete isolation time without any disturbance. Just hear them. Don't start attending your call in between. Obviously you will be a busy person, you will be getting lot many calls, unless until that call is very important, like you're getting a call from your higher officials. Sorry, mu transgress kuruchi, but don't indulge into that. Then just give a patient hearing. फास्ट 10 मिनट शुणी दियो से जो माँ जने आछंती बुढ़ी माँ जने ता कथा शुणी देबे आपण फाइनली आपण तांको ना जदी कहि देबे हो माँ ए जिंस तो मोर जहा भी नियम अछि मते करिया पे माने अलाउ करूनी बट मु चेष्टा करिवि ठीक अछि तो आपण हैरान होंतु ना आपण जानतु मु आपण नंबर रखिली जदी आपण पाखे नंबर नहीं आपण को माने जो भी रिलेटिव को नंबर रखिली साई पड़िसा नंबर रखिली मु मो सेक्शन रे देई दोची तांको सेक्शन रो भी नंबर आपण तांको देई देबे अदरवाइज निज नंबर भी देई देबे कहिबे आपण आसुंतुनी जदी कोन दरकार ए नंबर रे कॉल कर देबे मु जणे देबी कोन ही परियो दैट्स ऑल एंड सी जेतोले फेरीबे ना दैट 50% ऑफ देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड तो कोनदी पेशेंट हियरिंग इज ऑलवेज वेरी गुड थिंग हम बेसी साइड लाइक पढितली लेट्स कम टू द क्वेश्चन टॉपिक तो रिलेशन विथ द peer group is a group of individual of same age, similar social status, similar type of ability, who consider to share a similar value and interest among themselves. So that is peer definition. Okay, the behavior and the attitude of the adolescent are very much influenced by the peer. Kahinki? Because it helps them increasing the skills and the roles. Okay, सेमानक एक्सेप्टेंस दरकार तांको सी सेमाने बेले बेले एडोलसेंट किछि छोटो मोटो मेंटल सैक्रिफाइस भी करंती बिकॉज़ सेमानकु जदी डिजायर था कि हां मु ए ग्रुप रे मिसिबी ए ग्रुप रो मु भी गोटे पार्ट हेबी तो मे बी सेमाने गोटे टाइप रो स्किल न थाए सेमान पाखरे फर्स्ट से भाबंतु कि टॉलरेंट स्क्रीन सेमाने ना माने सेमाने टॉलरेंट नुहंती बट से पर्टिकुलर ग्रुप डिमांड कोछि टिके टॉलरेंट लोक दरकार तो से जिबे निजबुटी टॉलरेट हवा को चेष्टा करिया और से जो इमिटेट करिया चक्कर में किछि स्किल्स लर्न कर जानती अदरवाइज देखिथिबे किछि ग्रुप थाए जो माने आम 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 एडल्ट में देखिछु कि सेमान को ए बहुत इंग्लिश रे कथा होचन एगुडा हां तो से ग्रुप रो एटीट्यूड थाए ना आमे इंग्लिश रे कथा बा सो कॉल्ड आमे टिके सेही टाइप रो देखिबा तो से ग्रुप रे पसिया चक्कर रे किछि लोक सिखि जानते आई डोंट नो हैव यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग यस सर मोर हैंडराइटिंग सर मु सेमती डेवलप करिछि माने सांग मान को देखि तांको ग्रुप रे पिला माने केते भलो भलो लेखुचंती बा तांकर स्किल केते सुंदर माने विभिन्न प्रकार डिजाइन रे लेखुचंती यस तमि ही काली डेवलप करिछि कि किछि किछि गुरुडे हैबिट डेवलप हो जाय वो हॉबी डेवलप हो जाय राइट हां श्वेता कोन कहउतिले आपण कोन डेवलप करथिले सर सब किछि माने जेमति कि ड्रेसिंग स्टाइल कार जदी भलो लागला कि निश्चय आ जा आज्ञा सर एटा जदी बहुत बड़ राइटिंग जिंस कहले छोटो छुआ देखंतु जनरली ऑब्वियसली आमे एमती बैकग्राउंड रे आछू मे बी आम पेरेंट्स जते अधिक स्टाइल बा ई सब जिंस बस इट्स ए समथिंग क्लोथ वी हैव टू बाय एंड क्लोथ ओके द इमैटेरियलिटी सेटा आपण केते भल देखा जाय केते कोन देखा जाय बट जनरली आमे देखु कि गोटे ग्रुप अछि दे आर क्वाइट कॉन्शियस अबाउट द फैशन क्वेश्चन एंड एवरीथिंग वी वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप सेटा के एलीट ग्रुप टाइप रो थाए ताको ते ग्रुप रो मेंबरशिप न पाए मध्ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दरकार राइट तो यू वांट टू बी part of that group. It's very home science is always very easy and very fun to learn because बहुत जिंस ना easily relatable जोटा भी हमें एवरी डिस्कस करचे go माने just after this class try to relate this everything is relatable right so that is what तो हमें किछि skills और किछि roles हमें learn करू that is very good it's a positive sign okay so peer group can be have a positive influence on the individual जेमती भाबंतु बेले बेले आपण सांग साथी एमती मिल जिवे जो माने ना एकेडमिक्स रे बहुत बढ़िया करथुए आउ आप जस्ट कि से लोकर गोटे भाई आपण को पसंद आसे तो यू वांट टू बी विथ दैट पर्सन टू बी ए पीयर ऑफ दैट तो से ग्रुप रे आपण पाठी गले बट से ग्रुप रे ना होल डिस्कशन चलती केमती पाठ पढिया कोन करिया को नोट्स आनिया so you must have seen this group mu mog niche कथा कहूचे मु 8th क्लास रे मे बी आम स्कूल रे मे बी 25 26 नंबर पोजीशन रे थिली 9th क्लास रे सही बाहर को ही थिली सब दुनिया बाहर ही थिली जब 10th क्लास को एंटर करली आई हैव नेवर थॉट ऑफ लाइक कि से आम समय रे 750 वाला मार्क्स थिला
तो मु केबे 600 प्लस आनी पड़ी आई हैव नेवर थॉट बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी लाइक 450 वाला पार्ट तो मु गोटे सांग सहित सांग होवा स्टार्ट कली मते भल लागे ता सहित मिसिया बट ही यूज्ड टू बी इन द 600 मार्क just by in his influence I started scoring around 600 just no this is very mane mu पाठ पढुची कहूनी that this happens and I am sure कि ए टाइप जिंस आपन सहित भी हेई थिबो if otherwise you must have seen around year circle okay तो academics motivation vocabulary कथा जेमते आपण कहले इंग्लिश वगैरह बहु जन को इंटरेस्ट थाए different नुवा नुवा वर्ड सिखि आसी कहबी माने सेंस ऑफ जो कहनते कि शशि थरूर वाला आपण फील हबो तो से शशि थरूर काट देबे रेकॉर्डिंग रु तो सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी ए जिंस भी मोरल बैकिंग ए सब जिंस मध्ये हेल्प करे राइट नेक्स्ट इज एडोलसेंट कैन आल्सो have negative influence जोटा कि हमें जानी चाहिए इन जनरल हुए जेमति कि हां कंपटीशन माइंडसेट भी टिके अधिक हां कंपटीशन माइंडसेट सी देयर आर टू टाइप ऑफ कंपटीशन माइंडसेट वन इज नेगेटिव यू वांट टू एक्सेल योरसेल्फ and you don't want your friend to like be below your rank okay ha 3 idiot wala chatur bhi hi paranti ba virus se kon ta na narada Anchordas Chanchar. ha chanchar hi paranti so uh, if you are becoming chanchar then it is good okay so but if you wants to be chatur then problem so seta ko negative jinsa apon chahibe just see it is called the like if you want to be first there are two way you try hard to be first otherwise you ensure others are not studying like say jo magazine tole bharti gotla so the same thing okay during adolescence peers are the most important socializing agents and through the influence of the parents though the influence of the parents continue but peers ro katha sabut adhiko matter kare sei samay jodi peers kaibe nai mane aji बाहर आमे जिबा खाइया पई तो जदि मां जदि बहुत कष्ट भी किछि जिंस बनै भी थिबे बट स्टिल इट डजंट मैटर बिकॉज़ पियर जहा को छि नै सी माने सर्वोच्च फील बे इट्स क्वाइट नॉर्मल आमे देखि सांग मानन को पचरी कर कोन कहले हां सांग मानन को पचरी कहबी आज मु फ्री अछि ना नै मो अपॉइंटमेंट गुंटे ते चेक करी कहबी तो एडोलसेंट sees a mirror image मु जेमति कहतली काहे केते प्रायोरिटी एडोलसेंट तांको पीयर्स को दियंती बिकॉज़ से माने मिरर इमेज देखंती से माने देखंती जे तांको भीतर जो प्रॉब्लम्स होची सेम प्रॉब्लम्स तांको सांग मानन को भीतर भी अछि ओके तो ड्यूरिंग द एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज बिकम active member of the peer group and develop a deep friendship these all we have discussed just out there and discuss kale that's all apun samaste pointer कहजनी that means you all know everything let's go to the next thing teachers manko sahito kono relations develop हुए the teachers at the school plays a vital role in the life of the student the teacher should be excellent role model and the friend भी हवा दरकार properly ट्रेंड जो टीचर्स थांती टीचर्स ट्रेनिंग रा में कथा कहूछु से माने रिकॉग्नाइज करंती द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट whereas poorly trained जो टीचर्स थांती से माने नेगेटिव इंपैक्ट पकांती स्टूडेंट्स ऊपर तो ओवर एक्सपेक्टेशंस जेतबे एडल्टहुड रे छुआं को तो करा हुआ छुआं को किछि जो डिस्ट्रक्टिव बिहेव ना इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव लिटिल बिट ऑफ अनकॉमन बिहेवियर जेमति कि सिंपल कथा बेले बेले छुआ ना जेतबे एडल्सेंट रास जानती जदी ता पूर्वरु सेही टीचर तांको किछि जिंस टिके गाली करे बा किछि हार्ड जिंस कहि दे दे यूज्ड टू टॉलरेट दैट but in adolescent sometimes they used to reply back so that is also not being recognized by the teachers so being a good and a trained teacher they will not respond to this type of attitude because they know the certain changes are going inside that person and that person or the child or the student is not inherently like that it is just because of changes he is behaving such and जदि सही समय रे से टीचर्स ता डिस्ट्रक्टिव बिहेव करिया स्टार्ट करिवो बा बहुत ताको ऊपर कोनोसी प्रकार पनिशमेंट दवा स्टार्ट करिवो बा किछि कमेंट करिया स्टार्ट करिवो देन नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होई जे छुआंको भितरे आ सेइटा ना से मानको एकेडमिक परफॉर्मेंस ते मध्ये इंपैक्ट पकाय एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल से माने रिविलियस ही जानती ओके तो एडोलसेंट रो चैलेंजेस यदि आपण देखिबे सो दिस इज द चैलेंजेस इट इज दे वांट ए डिजायर फॉर फ्रीडम देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शंस विद द पेरेंट्स there is a search for the identity which is not going to establish at that particular point obviously identity establishment jo initiation jo kochu that is the initial foundation is done at the adolescent but the whole identity achievement will take some time next establishment in the society they wants that so these are the changes so sorry this is your social problems social changes
नेक्स्ट कमिंग टू द इमोशनल डेवलपमेंट और द इमोशनल चेंजेस तो इमोशनली जनक आम केतबळे कहू कि डेवलप्ड अछि बा इमोशनली मैच्योर बिहेव करछि दिस इज द थिंग इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस first you manage your emotions if at all you want to express your emotions then express it in a positive way and responsible way so that the surrounding will accept it rather than they will reject it right so that is the emotional development no means इमोशनल मैनेजमेंट अर्थ कौन जदि आपण सपोज कोची स्कूल रे बसचंती बा किछि गोटे रेस्पोंसिबल सोशल जगह रे अछंती यू हाउ मच यू फील लाइक यू आर क्राइंग यू वोंट क्राई ओवर देयर because crying in a social gathering may not accept by the society you come to a place in a isolation in your own confidence zone जोटी आपण को पाखरे पेरेंट्स को पाखरे बा सांगो साथी को पाखरे there you cry being an officer also used to cry it's not like जो मर्द को दर्द नहीं होता है ठीक है not मर्द only but any officer be it female or male they have the feelings they sometimes used to hurt and someone kandonti but crying in front of the public will like would spread a negative image because ए तो कांदी माने strong नाहंती ये what type of decision he or she will take so this type of thing आपको मैं कहूँ emotional stability कथा so you have your own zones so that where you can express the thing in a positive and responsive way that is the emotional development तो emotional changes कौन हुए there is an emotional seesaw मुझे जेमती कहूतली गोटे पॉइंट रे माने को कॉन्फिडेंट गोटे टाइम रे लेस कॉन्फिडेंट गोटे टाइम रे से माने निजुकु एडल्ट भावंती गोटे टाइम रे निजुकु छुआ भावंती देयर इज ए लाइक देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन सेल्फ एस्टीम केतबळे से मानो निजर जो एबिलिटीज अछि से ऊपर डाउट आसे ओ केतो बहुत बिलीव करिया स्टार्ट करंती मूड स्विंग्स वे बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंगर आउटबर्स्ट हुए जेमती कहउतली जो टीचर्स मानको सहित पेरेंट्स मानको सहित हठात पूरा आर्गुमेंट करिवे जोटा जनरली से माने केबे करनांती सेल्फ कांसेप्ट obviously self esteem और self concept एटा बिल्डिंग हवा बहुत जरूरी जदि बिल्ड न हैला देन फर्दर जो माने आगु को से माने केते भलो एकेडमिक परफॉर्मेंस करिवे कैरियर एस्पिरेशंस केते भलो रखिबे से ऊपर डिपेंड करची राइट जो पिला माने सपोज अर्ली एज रे यूपीएससी क्लियर करचंती बा नॉट ओनली यूपीएससी दे आर डूइंग वेरी गुड इन भलो जॉब करचंती जाय कि बहुत कम एज रे भलो एमएनसीज रे एस्टैब्लिश्ड हो जाउचंती व्हाई इट इज सो बिकॉज़ दे हैड ए वेरी गुड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कांसेप्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर एडोलसेंट तो जोटा कि सेमानो को ना कॉन्फिडेंट फील करोची do you feel like anyone is really I don't feel maybe say 1% or less than 1% maybe 0.01% pila thibe jo mane higher IQ lot of normal student only used to do great just because they have a higher self esteem and higher concept tanko upar nijero belief achi nijero ability upare seman janchanti they know their strengths they know their weaknesses right then rebelling against the restrictions generally with the teachers with the society with the parents right so all the adolescents are go through the stage of rebelling against the restrictions anger outbursts mood swings are most common in this stage adolescents feel as if they are sitting on an emotional seesaw feeling up like up in 1 minute and down in 1 minute gote point re both boy and girl jantibe especially boy thone better jantibe girlfriend ko kemti mood swing hue so this is one up in 1 minute and down in other feeling mature in one someday child in other day physical changes during adolescent ketole block he jaye ketole dp remove he jaye so physical changes during the adolescent are have emotional impact hormonal changes jo hochi like onset of menstruation in girls ejaculation of semen in boys so jo nocturnal flows kotha kohthili these sometimes make them some like feel like something wrong is happening inside them and hardly they will be able to internalize able to understand this is very common changes that actually supposed to happen in that particular phase aap pacheta sodu bada jinso jo apna OMG 2 dekhithibe ki sexual education ro amar darkar achi see how till what point we are supposed to reject the sexual education in our curriculum and it should be introduced early in the like curriculum so that by the time one will enter into the adolescent they must have basic minimum idea no these are the changes supposed to happen and this is happening they should celebrate this right next parents should be understanding and should educate and prepare their child or children in advance जोटा हम कहूतली कि एटा हमें जेहेतु हम एजुकेशन सिस्टम रे नहीं व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग from our parents to do that कि हां आगुरु तांको
माने बुझे कि रखिबे कि ए सब जिंस हबार अछि यदि होउची इट इज वेरी नॉर्मल एंड यू शुड एक्सेप्ट इट राइट positive and healthy way of responding to the stressful situations will help in decreasing the negative emotions जदि ठीक भाबरे आमे ताको हैंडल करि परले नेगेटिव इमोशंस डेवलप हबनी बिकॉज़ एडल्ट रा गोटे प्रॉब्लम आपण देखिबे जोटा कि इमोशनल प्रॉब्लम्स रासे सेटा होची जो कहले डीप स्टेज ऑफ डिप्रेशन को पड़ाए मनुष्य माने छुआ माने डिप्रेशन को पड़ांती एंजाइटी देखिए गोटे गोटे छुआ माने एडोलसेंट टाइम रे से माने पूरा प्रोलॉन्ग पीरियड सब बेले डाउन हेके थिबे कहा से मिसिबेनी डिप्रेशन रे थिबे सो नेगेटिव कथा ही कहउथबे नेगेटिव कथा कहउथबे जस्ट बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू हैंडल द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड एंड इन द सराउंडिंग राइट इवन द पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव इन दैट केस if the adolescent feel overwhelmed by the situation जदि से माने cope up करि पाउन से situation सहित and find very difficult to cope with the situation they should seek the help from the trusted sources like the friends and the family okay asking help is not a symbol of weakness एटा भी ना छोटो छुआ को पेरेंट्स टीचर्स शिक्षा बहुत दरकार कि आमे बेले भाबू ना कि we are self sufficient not to take help of others no asking help from your trusted one is a good sign because you have understanding of your support system you know you have your friends you have your parents there to back you in the difficult situations that is a very good sign because ame kohuchu one country is powerful but what not inherently because of their arms and ammunitions and the armed forces that is in place okay by the firepower we call them as their strongest or the most powerful nation so similarly you have your आपण बारे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल अछि you have a very good contact you may not be a very influenceable you may not be holding a very influenceable very high power position post in the government but still you have a very good contact then also you are very powerful and because you know your strengths right so asking help is not a symbol of weakness in fact it signifies the strength and good understanding of your inner resources okay building a positive self concept is very important for personality development ei jagare chota agu jai ki semanu ko adolescent ko help kariyo so let us see what is the self concept and what is self esteem jo jinsan already discuss karthile to self concept hochi kono the way in which you see your strength and weaknesses आपण निजर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को केमती देखुचंती सेल्फ कांसेप्ट जेतोले लो हुए यू सी ओनली द वीकनेसेस एंड केतोले हाई हुए जेतोले आपण निजर स्ट्रेंथ्स को अधिक देखंती ओके इफ यू सी यू हैव मोर स्ट्रेंथ देन योर वीकनेसेस देन यू हैव ए हाई सेल्फ कांसेप्ट सेल्फ एस्टीम कोन जो आपण पाखरे किछि बेटर आपण पाखरे जो स्ट्रेंथ्स गुडा अछि सेही स्ट्रेंथ ऊपर ना आपण प्राइड फील करिया स्टार्ट करंती बर्तन यू टेक इट एज योर प्राइड you have a high esteem relating to that particular skills so personal judgment of your ability if you have a high self esteem then you have a more belief in your ability adolescents begin to take pride in their ability and they pose and consider it as their asset right both self esteem and self concept jo katha koile it helps in the positive emotional development in the adolescent तो इमोशनल चेंजेस जो आमे जिंस देखिले कॉमन कौन थिला नेगेटिव चेंजेस देखिए जदी एंगर फियर वरीज एंजाइटी जेलसी ग्रीफ गिल्ट देन क्यूरियोसिटी पॉजिटिव चेंजेस कोन जॉय एंड हैप्पीनेस दैट देयर इज लव दिस promoting the happiness and growth in each other that is love right sorry अरे हां तो मेथड्स टू सॉल्व ए जिंस को सॉल्व केमती करा जाय परियो जो प्रॉब्लम्स रहिला फर्स्ट जिंस होची पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तापरे होची सेल्फ कांसेप्ट हवा कथा कॉन्फिडेंस लिखि दीजिए कॉन्फिडेंस इज आल्सो ओके अवॉइड कंपैरिजन विद अदर्स you should be unique with you open discussion with the parents and the friends participations in the socio cultural activity कहते कि आपण सोशली निजो को डिजेक्टेड फील करिवेनी you are a part of the society okay next participating practicing yoga and meditation obviously concentrations वगैरह improve करियो और ये जो hormonal changes रो जो outburst problems गुडा कछि that will be sorted out next is guidance and counseling that is the final thing you can opt for right तो आगे ची ऐड करिया भितरे सर जो डे ड्रीमिंग हुए हां सेटा सर हमें को ये माने जो इमोशनल ये ना हां मेंटल इमोशनल ही हमें लिखिया मु गोटे लिखी थी
डे ड्रीमिंग आसी नाही सर हाँ माने से सिमिलर टाइप ऑफ जिंस लिखिथिली हार्मोनल चेंजेस स्विंग तो लिखा है मूड स्विंग तो लिखा है बट हाँ ए गुडा सब आसी जिबा अपन लिखि परिबे राइट सर थैंक यू सर ठीक अछि आउ कोन रहिला ए भितरे वी आर डन विथ दिस ओके तो लेट अस वाइंड अप फॉर टुडे यस सर सर हाँ हाँ सर आपण जेमती लिखिजंती ସେମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର वगैरह ଦେଇକି ମାନେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆ ହେଇନି ମାନେ ଯେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କପିଟା ସେଟା ସେମିତି ଦେଖାଉନି ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ରେ ସବୁ କମନ ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଏଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍ ମୁଁ ସେମିତି ନ ଲେଖି ଆଙ୍ଗର ଫିୟର ଆଞ୍ଜାଇଟି ଯେମିତି ବୁକିଶ हाँ हाँ बुझी पाली किंतु हमहु टिके डेवलप कोन करियार छु म आपन कहि दोची गोटे जिंस हाँ इट्स वेरी इंपोर्टेंट एबे एते दिन क्लास कलेनी मु कहिनी आपन समस्त को सी first understand the exam then you all are good at writing I know exam आपन कोन दोचंती आपन ऑप्शनल लेचन होम साइंस फर्स्ट रिकॉर्डिंग बंद करे आपन कहि